Hello friends, welcome to UGPG Mathematics. In this video, we will discuss a question from real analysis. So, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का क्वेश्चन करने वाले हैं और अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि एनालिसिस का पार्ट है तो आपको वो समझना ज़रूरी है. तो let us start. This is question number 35. Let A be a closed subset of R, set of all real numbers. A is non-empty and A is not equal to R, then A is. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक क्लोज सबसेट दिया हुआ है R का which is non-empty and which is not equal to R and उसके बाद में A क्या हो सकता है, ठीक है, then A is. तो first option is the closure of the interior of A, second is a countable set, then third option is a compact set, and fourth is not open. So let us start this. Now we have given, so let us first see what we have given. So it is A is closed, ठीक है, closed subset दिया है. It is a subset of R, it is non-empty and this is not equal to R, ठीक है, तो proper subset है and it is not 5 means it is not trivial. So this first option says that A is the closure of the interior of A. So let me first denote this A interior. So the meaning of this is interior of a set A, where this A is a subset of R and A bar means A closure. So closure of A. So we will use these symbols. So this first option says that A is, that means A is the closure of, closure पता है किस सेट का, the interior of A. So इंटीरियर ऑफ ए का क्लोजर, ठीक है, द क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ ए. सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन. तो इज इट ट्रू? दिस इज आवर क्वेश्चन. सो क्लियरली नॉट, बिकॉज इफ वी टेक एग्जाम्पल, टेक ए इज इक्वल टू, टेक अ सिंगलटन सेट 1, then union with, take a closed set, a closed interval say 2 3, ठीक है. तो how to construct this example? Look at this interval, it is a closed interval, hence it is a closed subset. और क्या करना है हमें, इसके बाद एक सिंगलटन सेट लेना है. नाउ सिंगलटन्स आर क्लोज सेट्स, सो ये भी क्लोज्ड है एंड वी हैव यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स. तो फाइनाइट यूनियन है क्लोज सेट्स का, तो ये पूरा सेट A इज़ अ क्लोज सबसेट ऑफ R, ठीक है. तो A इज़ अ क्लोज सबसेट ऑफ R सच दैट यहाँ पे A इज़ नॉन एम्प्टी एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू द होल R, ठीक है. तो ये सारी कंडीशंस ये सेट सेटिस्फाई करता है जो क्वेश्चन में है वो. नाउ लेट अस चेक दैट is it equal, A is equal to A interior and its closure. So first of all let us find out A interior. So A interior is, now look at this, A interior is just, now this is just singleton set, so it will not play any role in the A interior, and this set, this one is not in this closed set, so it will not play any role in this interior. So take the interior of this. So what is the interior? Open 2, 3. This is open interval. Now take the closure of this, because we want A interior, its closure. So A interior, its closure is, now closure means whenever we have open set A comma B, A B are finite real numbers, then its closure is closed interval A comma B, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
A is equal to singleton 1 union 2 3, but which is not equal to 2 3 closed interval which is equal to A interior its closure. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 1 है एंड हियर 1 इज नॉट देयर. ठीक है, तो A is not equal to A interior its closure for this example. That means ये क्या है, काउंटर एग्जाम्पल है कि दिस A is equal to A interior its closure ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये काउंटर एग्जाम्पल है. ठीक है, तो this is not true for all closed subsets which satisfy all these properties. So this first option is not the correct one. So let us go for second option. So second option is the A is a countable set. So clearly it is not a countable set, because if we take, suppose you take A is equal to say closed interval 1 comma 2. ठीक है, तो A is not empty, then A is not equal to whole R, and clearly it is closed because it is a closed interval in R. So A satisfies all these properties. But now look at this interval. This closed set is, this set is uncountable. ठीक है, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है, दिस इज ऑल्सो not true for every closed subset which satisfy all these properties. So ये भी counter example है, तो ये not correct. Then go for third example, third option, A is a compact set. तो ये भी correct नहीं है, क्योंकि counter example आप ये ले सकते हो कि take A is equal to, this is interval closed 0 to infinity. ठीक है, this is not equal to 5 and this is also not the whole R. But now let us look at whether it is closed or not. So closed मतलब क्या होता है? So let me recall this. Let B is a subset of R. B is closed if B कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट होता है बी का, बी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. ठीक है, तो ये सबसेट क्लोज है क्या, ये चेक करने के लिए इसका पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो. सो व्हाट इज हियर कॉम्प्लीमेंट? दिस कॉम्प्लीमेंट इज, नाउ वी हैव क्लोज 0 हियर, सो इट विल बी ओपन 0 हियर एंड 0 टू इन्फिनिटी है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 0. ठीक है, तो लुक एट दिस, दिस इज एन ओपन इंटरवल, सो इट इज ओपन सेट इन R. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ हमारा, ओपन हुआ, तो A क्या होगा, क्लोज्ड होगा. देयरफॉर इट इज क्लोज्ड. सो A is closed, it is non-empty, it is not equal to R. And just look at this, this is not a compact set. Why this is not compact? Because let us just recall a theorem, Heine-Borel theorem, which says that A is compact in Rn. So here n is equal to 1 because we are in R, so it is true for all n, R2, R3 and so on. So is compact in Rn if and only if A is closed and bounded. ठीक है, तो अगर कोई सबसेट है Rn का, here it is understood that A is a subset of Rn. So अगर वो closed and bounded दोनों भी है तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और अगर वो कॉम्पैक्ट है तो उसको क्लोज्ड एंड बाउंडेड होना ही चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या सबसेट कंस्ट्रक्ट किया है कि वो क्लोज्ड है. ठीक है, मैंने ये भी प्रूव कर दिया, वो क्लोज्ड है, लेकिन ये बाउंडेड सेट है क्या, नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है. तो यहाँ पे A is not compact because
A is not bounded. A is not bounded and therefore it is not compact. So ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है फॉर एनी सेट. सो दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल. काउंटर एग्जाम्पल मतलब क्या है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया है कि ए इज कॉम्पैक्ट सेट, तो है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड अ काउंटर एग्जाम्पल. तो लास्ट ऑप्शन बस अभी 1 2 3 options are not correct, so fourth must be correct. So but let us see why this fourth option is correct. So we have to prove that this A is not open. Okay, so we will use your proof by contradiction to prove this. So suppose on the contrary A is open. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि A is open. We have to assume this and we will end up with some contradiction so that this A will be open. So A will be not open. So just look at this R. We can write this as A union A complement. ठीक है, where this A is a subset of R and A is non-empty. So we can always write R is equal to A union A complement, and along with this we have A is closed subset of R. ठीक है, तो here just note that A is not empty, so this implies A complement is not equal to R. ठीक है, तो A मतलब कुछ पॉइंट्स है. सपोज वी आर, दिस इज आवर रियल लाइन, और सपोज ए में इतने पॉइंट्स है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये बाकी के सारे पॉइंट्स होंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो ए के पॉइंट्स है वो नहीं आएंगे. दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू होल आर. सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एम्प्टी बिकॉज दिस ए इज नॉट इक्वल टू आर. नाउ we have A complement is non-empty, A complement is not equal to R, and also note that we have assumed this A is open, sorry, A is closed here. So from here we know that if A is closed then A complement is open. ठीक है, तो हमारे पास ये है. Now we also note that this A is a subset of R which is not equal to phi. A is not equal to R and from the assumption A is open. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? A and A complement are both non-empty, not equal to R and open subsets, and also this is a disjoint union of R because A and A complement are always disjoint. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? R is a union of disjoint union of non-empty proper subset open subsets of R. That means this A and A complement forms a separation for R, set of all real numbers. So this implies R is not connected. ठीक है, but this is a contradiction. This is a contradiction because we know that R is a connected set. ठीक है, तो यहाँ पे contradiction है. That means our assumption is wrong. So A is open. So this is wrong. That means A is not open, and hence this fourth option is the correct option. Thank you.